Perfect. So I have this assignment from Nikit, right? So he has nicely presented, the results for the survey questions in a presentation format. So which is good. This is nice. So this you can easily convey to your clients, that based on the survey, these are the final outcomes. And based on this, we are moving ahead to the next phase of personas and journey maps, etc. Even the general research is fine. Of course, the presentation is a little off, but that's okay. That can be done. This is else. I request everyone else to be on mute. Okay. So this is a good thinking, but to be honest, it becomes a little confusing, like to map out again and again. So what would be an easier way is we have these competitive competition names on the top, okay, like make my trip, yatra, etc. And here we can simply write excellent, good, satisfactory that way. So for make my trip, the navigation is say for example excellent. So here it is satisfactory, right? So here at the bottom you will write satisfactory, right? So let me pull up an example for you so it's easier. Hmm? Mm, yes, here's the research. Okay, I'll show you the example. In the meanwhile, we'll just go through this. So the target audience, even the personas are fine. That's in the perfect lines. So till this, it is perfect. Only it's the competitive analysis. So let's see the competitive analysis. Mm, ah, I'm resharing my screen. So if you see it this way, right? That make my trip, and you write excellent adjacent to navigation, good adjacent to navigation of I mean this navigation for yatra. So this is a much more simpler way to understand for the client, and also for the uh, designers also, because it is very difficult to map out the colors and terminologies again and again. No? So just revise this particular piece. Rest everything is fine. So good attempt there. Okay. We need. Do you have your assignments? Yes, sir. Okay. I would request you to please share your screen and take us through the assignment. No? Also, Harsh, I just had a few questions. Like, I, w- Sure. I was going through the websites for competitive analysis, and like, how do we know that this particular website is, excellent and not good? Because there is marginal difference between excellent and good. So, what should be our way of thinking? What should a UX designer think in a particular way, which makes him feel that this is an excellent design or this is a good design? And So it's similarly for the poor and satisfactory. correct. So it's a very good question. So see, at this point, I would say that it would be difficult, to judge based on point-to-point UX. Okay, but as in how you proceed with the course, right? So today we are going to cover, the UX laws. Uh, we are going to cover the user mapping and information architecture. So there it would be easier for you to then judge the rest of the websites based on those the UX laws, based on those journey maps, correct? So Okay. right now you would be judging them only with regards to the look and feel or whether it is simple or not. It is fine because we are just starting off, correct? Okay.
Once you have overall idea of the UX and the UI, you would easily be able to judge it whether this website is good enough from UX standpoint or it is good enough from UI standpoint or both are not satisfied to that. Okay. Yeah, yeah, Vinny, please share your screen. Sir, my work is on PC and I am online in my mobile. So how can I share my screen? Okay, so you don't have access to your system? What? You don't have access to your system? Yes, yes. Okay, so no So worries. So share it to me once you have the link. Okay, I'll have a look at it post okay, the sir. lecture. I But can do send share it. I can share my whole document in JPG on your account WhatsApp. No, just send me the Figma link, so it would be Okay, sir. easier. Yeah, Okay, sir. perfect. Okay, cool. So let's move ahead. The last lecture we did was user personas. So today what we are going to do is first the journey map. So now what is journey map? Let me again share my screen. Okay. Yes. So what is journey map? So when a user comes to the platform, they have different set of journeys. Not all the users perform a happy journey all the time. Okay. So say for example, this is an example of a user journey right now. Okay. So here what is happening is, yeah, Vinny. सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी. जब हम कोई ऐप बनाते हैं मान लो ट्रैवल ऐप है जिम ऐप है या कोई फाइनेंस ऐप है तो उसमें जो हम्म, यूजर सर्वे करना होता है यूजर पर्सोना होता है वो सब एक यूजर का होता है कि सब यूजर का करना पड़ता है मतलब ये जो डेटा हमें निकालना पड़ता है सब यूजर का. अभी हमने जो एक यूजर का हम सीख रहे थे कि यूजर पर्सोना कैसे है, उसका वो जो सब क्वेश्चन होते हैं नहीं, वो एक यूजर का नहीं था, वो सब यूजर का मतलब था. वो डेमोग्राफिक जनरल रिसर्च वो सब यूजर के करने पड़ते हैं ना हाँ, सो जो यूजर पर्सोनास जो हम बनाएंगे, वो जितने हाँ आइडियल पर्सोना होंगे उनके बनाएंगे. तो जैसे हमने ट्रैवल ऐप के लिए जो हमने पर्सोनास डिफाइन किए थे ना, हाँ करेक्ट? तो उसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग होंगे, तो जो एकदम डिस्टिंक्ट होंगे, यूनिक होंगे, हमको वो सारे बनाने हैं. तो वो आपके ओके कुछ 4-5 निकल के आएंगे. अच्छा हम्म, ठीक है उनमें से ऐप हम बनाएंगे नहीं, मान सब लो 100 बनाएंगे. सबको मिलाकर ये ऐप बनाएंगे नहीं, सो जैसे अभी ये निकेत का एग्जांपल था, राइट? हाँ तो इन्होंने, देखिए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये देखिए, अब यूजर पर्सोनास इतने सारे हो सकते हैं. बिजनेसमैन जो बिजनेस ट्रिप भी प्लान कर रहा है, ठीक है, हम्म, लेकिन वही बिजनेसमैन एक फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकता है, तो वो एक फादर हो गया. हाँ करेक्ट? जैसे यहाँ पर करेक्ट एक स्टूडेंट है, वो फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहा है, हाँ ठीक है, हाँ वही एक स्टूडेंट है जो बॉय मैन जो अपने फैमिली के लिए भी प्लान कर रहा है. तो ये एक पर्सोना हुआ, दूसरा पर्सोना हुआ. करेक्ट? वाइफ प्लानिंग अ वेकेशन, वुमेन प्लानिंग अ वेकेशन, तो वो दोनों का एक ही पर्सोना हुआ, है ना? तो टोटल यहाँ पर 12 है, लेकिन अगर आप पर्सोना देखोगे जो इन्होंने बनाया है, एक वर्किंग प्रोफेशनल का है, एक स्टूडेंट का है, एक फीमेल वर्किंग प्रोफेशनल का है, एक ट्रैवल ब्लॉगर का है, एक बिजनेस टू बिजनेस का है. तो इस तरीके से उन्होंने सबको कवर कर दिया. अच्छा समझ में ठीक है आया? हाँ हाँ, समझ में आया ओवरलैप हो गया. तो ये जो है ना, ग्रेजुएट स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, ट्रैवल ब्लॉगर, वैसे आपको जो यूनिक सेट है, आपको उसके पर्सोनास बनाना है. ठीक है ठीक है? हाँ ओके, परफेक्ट. चलो. सो कमिंग बैक टू द यूजर जर्नी मैप. So अब यूजर जर्नी मैप में हम क्या करते हैं ना, वी फर्स्ट बिल्ड आउट स्मॉल जर्नीज ऑफ यूज केसेस. सो जैसे ये एक यूज केस है, a user is in rush and wants to book hotel and flight urgently.
ठीक है. सो अब ये पर्टिकुलर यूजर क्या करेगा? सो अब ये पर्टिकुलर यूजर का एंट्री पॉइंट क्या होगा? हम वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए हमने वेबसाइट का एंट्री पॉइंट लिया है. ठीक है. सो इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा? वो डायरेक्टली जाके डोमेन सर्च करेगा या लिखेगा, मान लो मेक माई ट्रिप. ठीक है. सो मेक माई ट्रिप पे जाएगा, उसके होम पेज पे लैंड होगा. वो सबसे पहले फ्लाइट के अंदर जाके फ्लाइट सर्च करेगा, फ्लाइट्स की लिस्टिंग आएगी, वो डिटेल्स देखेगा, बुकिंग डिटेल भरेगा, पेमेंट करेगा, and then he will get the success. Once he gets the success page, now what he'll do is he'll again go back to home. Now he'll switch to hotels. Okay. As soon as he switch to hotels, he'll search his location. He'll get the listing. He'll filter out, you know, that whether I want 4-star, 5-star, 3-star, etc. What is the location? Specific location, nearby hotel, nearby airport, or etc. He'll again get the hotel listing after the filter. He'll go to a particular hotel detail page. He'll fill out the booking details. He'll make the payment and success. So this is one set of journey. Okay. Now imagine that this same user is now using the web version of on the mobile. Okay. Once he reaches the airport or once he reaches the hotel. So what will be his journey now? So he'll again first land on the home page, but this time he won't search or do anything. Correct? He will go to his account, my account. Under my account, he'll go to my bookings. Under my bookings, he'll tap on the hotel booking. He'll see the detail and he'll show that particular thing to the respective reception. And that's it. He'll close the tab. That's another small journey of a user. Correct? So this way, we have to identify as to what sort of different journeys, okay, do we have. Small journeys. Again, this would be overlapping, so we just have to find out the unique ones and we have to design those unique journey maps. Okay. And once we do that is when we finally design the entire information architecture. Okay. So right now I am assuming that only Niket is has joined from system, right? Rest everyone is from their phones. Yeah. Yeah. Okay. No worries. So what I'll do is I'll right now design one more small journey. Okay. My screen is still visible, right? No. Sorry. Yes. Is it visible now? Yes. Yes. Visible. So I'll design one more, journey map. Okay. So now what he'll do is he'll first land on the home page. We'll get rid of all this. He'll land on the home page. Okay. He'll log in. He'll move. He'll go to say my account. He'll from there he'll navigate to my bookings, and from there he'll select a particular booking. Right? Is everyone following? Yeah. 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 Booking detail. Okay. And once he shows this booking detail, he'll straight away close the tab. That's it. You know. So this is another short journey of a user. Hmm? Say for example, we have another journey that a user needs to compare or needs to check flight
cost, flight rates. So वो क्या करेगा? He'll come on the home page. He'll go to the flight section. He'll search. He'll see the listing, flight listing. ठीक है? He'll probably filter or sort. Yeah. He'll again see the revised listing, and that's it. He'll just see the rates. He'll do nothing else because he's not here to book right now. Okay. So these are the small journeys that we have to define. So इसमें भी हमको सिर्फ यूनिक बनानी है, सारी नहीं बनानी है। ये पेज भी करो, ये पेज भी करो, नहीं, not that way. It is just for us to know as to what are the different entry points and what are the different exit points. अब मान लो, ठीक है, that there is a user clicks on ad, user clicks ad on Insta and checks the offer. Okay. So what will happen here that he won't land on the home page. He'll land on a landing page or offer page. Okay. He won't land on any of the this page, detail page. Okay. So he'll land on a specific offer or landing page जो भी उस ad में link किया है. So मान लो वो offer flight की है. So then here what he'll do is landing offer page पे गया, he'll browse what is it, and then finally, he'll probably save or bookmark. That's it. वो immediately book नहीं करेगा. So this is another way. Or maybe चलो browse किया, he'll probably fill out some form if there is any. Fill out offer form. That's it. है ना? So these are different journeys that we have to define in the journey map. Okay. This is first thing. Everyone clear? Any doubts? Yeah, Harsh, sorry to disturb. Fill out form. क्या कहना चाह रहे? What are you trying to say here? So बहुत Fill बार out. मान लो एक ad है, ठीक है, जैसे एयर इंडिया इज प्रोवाइडिंग 50% ऑफ. ओके. सो आपको तुरंत वो 50% नहीं बता रहा है. आप उस पेज पे जाते हो, ठीक है, आप ब्राउज करते हो कि अच्छा ठीक है, मुंबई टू सिंगापुर देयर इज एन ऑफर. व्हाट इज द ऑफर? नहीं बताया है. So for that, you just fill out this form and then you'll see the actual percentage because the offer is say up to 50%. ठीक है. So there will be some form. So this is a small journey when users are landing from an ad. है ना, वो होम पेज से नहीं आ रहा है. So उसकी क्या जर्नी होगी तो वो हम डिफाइन करते हैं. Okay. ठीक है. Any more doubts, anyone? Yeah. इसके लिए questions different रहेंगे. We have to form our own questions. There won't be any questions. These would be use cases. Okay. So you'll have to think it from your personal experience also as to how do you land on the websites. So अभी जैसे आप जैसे वो एक पर्सना था जिसमें वो अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान करना चाह रहे ट्रिप. ठीक है. सो ऐसा नहीं होगा कि वो मेक माई ट्रिप पे गया और उसने तुरंत देखा बुक कर दिया. नो. What will it do? He will first search as to packages in Goa or cheapest packages of Goa. Correct? Then he'll open up multiple websites. He'll open Make My Trip, he'll open Booking.com, he may open Airbnb also. है ना? लेकिन उसका जर्नी क्या हुआ? वो डायरेक्टली होम पेज पे कैसे आया? He first searched. है ना? So यहाँ पर जब हम उसका जर्नी मैप बनाएंगे ना, हम लिखेंगे यूजर searches on Google and lands on a package page. Correct? Not on the home page.
Yeah. सो अगर गोवा का कोई पैकेज है तो वो पैकेज के डिटेल पेज पे आएगा डायरेक्टली, है ना? करेक्ट. Okay. So this will be just for one user, like वो personas जैसे हाँ, लेकिन करेक्ट खाली एक करेक्ट. यूजर का डिफरेंट यूज केसेस बनाना है कि कैसे एक वो। यूजर का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सब यूजर का ना यूज केसेस सेम ही होगा. अभी हाँ फॉर एग्जांपल ये जो हमने यूज केस देखा है ना, टू हाँ शो एट द होटल रिसेप्शन, तो वो अगर कोई फादर हो, कोई बिजनेस ट्रिप वाला हो, या कोई एक लड़का हो या कोई लड़की हो, हाँ दिस जर्नी विल बी द सेम, राइट? या सब या यही करने वाले हैं, करेक्ट. या सो इसमें पर्सोना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द यूज केस, कि क्या ओके रीजन से यूजर अपनी वेबसाइट पे आएगा. दैट ओके नीड्स टू बी फर्स्ट थॉट थ्रू. तो हाँ अभी जैसे हमने जो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जो एक यूज केस जो अभी आपने बताया कि इट वाज फॉर showing our confirmation to the hotel people, करेक्ट. uh, and but that is not how a customer reached to our website. That is a use case for a hotel reception to confirm our booking. No, 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 So no. So see, there are two things. hmm, Hotel reception is not doing this. Me as a user, okay, so hmm, I go to that hotel, I tell that I have a booking in the name of Harsh, okay, hmm, and then that hotel guy asked me that, can you show me the confirmation or receipt, or the uh-huh, invoice or confirmation, hmm, hmm, correct? So then what I'll do is, as a user, I'll go to make my trip, I'll log in, I'll go to my booking and then show him the booking confirmation. That's it, hmm, correct? So that's yeah. why the use case is user needs to show the booking details to hotel reception. Okay. So there can be use cases for when user needs to raise a complaint. That can be one of the use Correct, case. correct. Uh, so it's not just when we are mapping for the journey. Just इतना नहीं कि वो booking तक payment तक ही हमको journey mapping नहीं बतानी है. उस Right, application के अंदर जो exactly. जो चीजें हो सकती हैं उन सबकी Correct, journey map बनेंगी. हर correct, Okay. So correct. You फिर got it right. तो उसके लिए You तो got it. फिर काफी जर्नी मैप्स बनेंगे फिर तो। हाँ, लेकिन आपको मैंने इसलिए यही कहा कि जर्नी मैप्स तो काफी बनेंगे, करेक्ट. हम्म लेकिन जो ऑब्वियस है, जैसे वो कोई अबाउट अस पेज पे आ रहा है, ठीक है, हम्म वो सारी जर्नीज जरूरी नहीं है. हम्म ऐसे जो एज केसेस वाली जो जर्नी है ना, जैसे आपका भी एक पॉइंट था कि सपोर्ट वाला, सो उसकी हाँ आप जर्नी बना सकते हो, है ना. एक हम्म सर्च वाली अगर फ्लाइट की हो गई, सो नॉट हम्म नेसेसरी आप होटल की भी बनाओ अलग से. नॉट हम्म नेसेसरी आप आपने अभी रिसेप्शन वाली जो बनाई है, आप उसकी सेम फ्लाइट की भी बनाओ, नहीं, नॉट नेसेसरी. एक आपने हम्म बना दी, दैट इज फाइन. दिस विल बी सिमिलर फॉर फ्लाइट्स आल्सो, है ना. हम्म तो वहां पर आपको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली द यूनिक वंस, दैट्स इट. सो वन मोर पॉइंट, या फिल्ट्रेशन की भी जर्नी बना सकते हैं क्या? हमें बनानी होती है क्या हाँ, वो यहाँ फिल्ट्रेशन? पर आ गया ना, वो आ गया ना यहाँ पे. जैसे फिल्टर सॉर्ट करने के बाद रिवाइज लिस्टिंग दिखी, दैट्स इट, हम्म है ना. वो इसमें ही कवर हो गया, सो दैट्स ओके. ओके also like every time booking show करने के लिए like in hotels we can also show receipts from email, so वैसे भी सो हो वो सकता अपना यूज केस नहीं है. हाँ, वो अपना यूज केस नहीं है, लेकिन हम हम्म सिर्फ है. जो वेबसाइट पे वो क्यों आ रहा है उसी का हम यूज केस लेंगे, So ये खाली वेबसाइट के लिए, सिर्फ not वेबसाइट के लिए. not also for web application or mobile नहीं, applications. नहीं, अगर हम वेब ऐप डिजाइन कर रहे होते, या सॉरी मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहे होते, तो Yeah. हम मोबाइल ऐप के यूज केसेस बनाते. Okay. Okay. हम बना रहे वेबसाइट के लिए, Okay. assuming that they don't have a mobile app, Okay. ठीक है. बट सिमिलर जर्नीज या सिमिलर टाइप ऑफ यूज केसेस आप मोबाइल ऐप के लिए भी करोगे, Okay. ठीक है. सो इसका मेन एजेंडा क्या होता है कि यूजर हमेशा होम पेज से नहीं आएगा, करेक्ट. सो वो कौन से पेजेस से आएगा, वो क्या देखना चाहेगा, करेक्ट. ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट. सो मान लो अभी ये कोई पैकेज डिटेल पेज पे आ रहा है, तो वो होम पेज से तो लैंड नहीं हुआ है. सो पैकेज डिटेल पेज शुड बी डिजाइन्ड इन अ वे
that it gives them an entire gist. इसलिए ये जरूरी है कि कौन से क्रूशियल पेजेस है जिस पे ज्यादा आपको एम्फोसिस देना है. ये उसका इस चीज का आउटकम ये होगा एक. और दूसरा आउटकम ये होगा कि जब आप पूरी जर्नी बनाओगे, पूरा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाओगे, है ना, तो तब आपको ध्यान में होगा दैट दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच आई शुड नॉट मिस इन माय एंटायर आर्किटेक्चर. क्लियर है? Okay. राइट. So, सो ऐसे आपको जितनी भी जर्नीज मेंशन होती है, राइट, यू विल हैव टू डिजाइन इट. okay. और Uh, सर डिटेल्स इज लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां से वो Yes. ब्राउज करेगा और फिर मेन जो प्लेटफॉर्म Correct. है उस पर. Correct. Correct. ओके. one more question. Yeah. When we are creating journeys for how the customer is checking, coming to our website till checking out, do we make this journey map for the payment interface also when we are designing this? Because even payment is one of the biggest factor, I think, when a customer backs out or he turns the deal for any website. So हाँ, उसकी भी जर्नी मैप क्रिएट होता है या करते हैं या नहीं करते हैं? जस्ट नॉर्मल हमने क्वेश्चन. यहाँ पर किया है ना ये. जैसे अभी ये यूजर आया, अभी इसको तो अर्जेंसी थी इसलिए इसने पेमेंट कर दिया. नहीं, जैसे करेक्ट. पेमेंट पेमेंट के खुद के अंदर इतनी जर्नी मैप्स बन सकते हैं ना, जैसे ये तो हाँ, बड़े नहीं ब्लॉक नहीं. लिख दिए हैं. हाँ, हमको ब्लॉक्स ही बनाना है. जर्नी मैप में आपको ब्लॉक्स ही बनाना है. ओके. आपको इसके फर्दर डिटेलिंग्स में नहीं जाना है. और पेमेंट भी जो होता है, करेक्ट, सो दैट्स अ थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जहां पर वो होता है, तो उसका कंट्रोल तो आपके पास भी नहीं है. आप बुकिंग नहीं, डिटेल्स, जैसे अपन कहीं बुकिंग भी डिटेल्स ऐड करना आपके पास होता है. ओके. नो, जस्ट माय क्वेश्चन इज बिकॉज आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, सो पेमेंट गेटवेज को तो हम साइन अप करते हैं ऑन आवर वेबसाइट, करेक्ट. and there are different payment gateways for different modes of payment. करेक्ट. करेक्ट. And so वेबसाइट के थ्रू वो भी बहुत एक अपने आप में बड़ा सिनेरियो होता है पेमेंट का भी, कि तुम क्यूआर कोड के यू वांट पेमेंट और यू वांट चूज पेमेंट थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, एंड वो हमारी वेबसाइट पे कर रहा होता है. फिर वो बाद में जब व्हेन ही एंड्स तक वो सेलेक्ट कर देता है कि हाँ मुझे HDFC या फिर पेपाल के थ्रू पेमेंट करना है, देन वो पेपाल की वेबसाइट पे जाएगा, पेमेंट करेगा और फिर हमारे बैंक में पैसा आएगा. दिस बट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. जैसे बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, मान लो अमेजोन हो गया या मिंत्रा हो गया, या से फॉर एग्जांपल अभी मेक माई ट्रिप भी हो गया, ठीक है. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इंटीग्रेटेड द पेमेंट गेटवेज. उसका एक पार्ट है, नॉट द एंटायर पेमेंट गेटवे, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एट देयर एंड, जहां पर वो खुद का यूआई ले रहे हैं, वहां पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करवा रहे हैं, ठीक है. और जब आप सबमिट करते हो तो वो उसका एक डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है. वो सारी डिटेल्स उस एपीआई से ट्रांसफर होती है और फिर आपको एक सक्सेस पे दिखता है, ठीक है. लेकिन अगर किसी के पास इतना स्कोप नहीं है, बिकॉज अगर आपको वो सारी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे लेनी है, उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस, ओके, बहुत सारे कंप्लायंसेस है. सो इसलिए यूजर्स क्या करते हैं, जब मोमेंट यू क्लिक ऑन कंटिन्यू टू पेमेंट, वो डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है. whatever payment it is, either it is PayPal, either it is Paytm, Citrus, or Razorpay, whatever it is. फिर सब कुछ आपका वहां पर होगा. and what next you see the success page, that's only our page of the website, ठीक है. so that's why there are two approaches to it. but when we design the journey map, you will never start a journey from a payment page, correct. You will never start a journey from payment page. Getting my point? हाँ हाँ. ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली पेमेंट पे ही पेज पे चले जाओगे. नेवर एवर. नहीं, हाँ, मेरा जो मॉट वाज माय पॉइंट कि जैसे ये ब्लॉग्स जिनकी बात कर रहे हैं, इन ब्लॉग्स में भी सब इनकी यूजर जर्नीज भी इन ब्लॉग्स की.
तो मैं नहीं वो वो पूछ हम रहा था, वो हमें क्रिएट करनी होती है इस नहीं स्टेज पे या फिर नहीं क्रिएट करनी होती है? नहीं जी, नहीं जी, वो नहीं क्रिएट करनी है, बिकॉज दैट विल बी पार्ट ऑफ योर वायर फ्रेम। ओके, ओके, हाँ, ओके, दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर वायर फ्रेम। ओके। सो इन दिस वी जस्ट कीप इट वेरी सिंपल कि हाँ, यस, किस किस बात बटन्स को क्लिक करके वो क्या क्या कहाँ किधर मूव कर रहा है, दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट, कौन से स्क्रीन से कौन से स्क्रीन पे वो फ्लो हो रहा है, दैट्स इट। दैट्स इट, ओके। इसलिए हम इसको जर्नी मैप बोलते हैं कि भाई वो उसकी मैप कर रहे हैं हम जर्नी, वो कहाँ गया, बस उतना ही। ओके, सो इसके जितने भी बाकी के यूज केसेस होंगे यू विल हैव टू डिजाइन इट, ठीक है, ओके, बिफोर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स। अभी लेट्स मूव टू द बिगर पार्ट ऑफ दिस, which is nothing but the information architecture. Okay, so हम ओके। ये हमने जो बनाए थे छोटी जर्नीज थी। हम्म, Now coming to the bigger information architecture. अब इसमें it would be a consolidated sitemap sort of a thing, ठीक है। So by default सबसे पहला पेज होगा होम पेज, हम्म, excuse me, ठीक है। So by default page would be a home page, ठीक है। हम्म, अब होम पेज पे जाने के बाद और कौन से मॉड्यूल्स होंगे। सो नाउ लेट मी क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स आउट हियर। साइट मैप में, ठीक है, we would factor out the modules and the screens, only the modules and the screens। अब modules क्या, screens क्या होती है। So if I go to any of the websites, make my trip on, ठीक है। So I see a home page, correct, हम्म, I see a home page, so that is a screen। If I click on search, now that's a search result screen, ठीक है, या listing screen, okay। हम्म, If I click on book now that's a detailed screen of a flight, okay। If I click on proceed, that's the screen we called as booking details, okay। So हम screens पहले factor करेंगे in the information architecture। अब modules किसको बोलते हैं, मैं उस पे आता हूँ। Let's first list down all the screens and then we will see as to what are the modules, ठीक है। So अभी क्या क्या होगा, flights, correct, hotels। अब फ्लाइट के अंदर क्या होगा, फ्लाइट का एक सर्च, सर्च। राइट। में भी फिल्टर आ सकता है, प्राइस लो। नहीं, इसमें डेटा पॉइंट्स नहीं, अभी सर्च करने के बाद क्या आएगी, उसकी लिस्टिंग आएगी। हम्म, लिस्टिंग के बाद अगर मैं किसी एक पे जाऊंगा तो फ्लाइट डिटेल आएगा, है ना। फ्लाइट डिटेल पे if I am clicking on say book now, it will take me to the booking details page, हम्म, right। या, बुकिंग डिटेल के बाद I'll get a review page कि जो भी मैंने ऐड की है हम्म, डिटेल्स, हम्म, राइट और नॉट। हम्म, Once I click on review, it will take me to the payment पेमेंट। page, correct, and post payment then it will take me to the this page, what we say, uh, the confirmation page, right guys, just give me a second. Guys, just give me a minute, I'll be back.
Yeah, so sorry. All right, so then we have the confirmation. Okay, same applies for the hotels also, but since the data points will be different, we are we will have different pages designed for us. ठीक है, अगर पेजेस सेम होते तो हम शायद वापस ना लिखते. ओके, सो फ्लाइट हो गया, होटल्स हो गया, और क्या होगा? एक हो सकता है ऑफर पेज, सॉरी, ऑफर पेज हो सकता है, राइट? वी कैन हैव a dedicated page for packages, correct? Yeah, we can have footer में होगा probably, but about Contact. में भी करेक्ट, कांटेक्ट हो जाएगा, And about प्राइवेसी से पॉलिसी. टीम, ये सब अबाउट के अंदर आ सकता है ना. करियर्स, ठीक है. mm, अब एक चीज जो होगी दैट इज लॉग इन, लोग करेक्ट. लेट्स लॉग आउट के नीचे हो सकता है अंदर फॉरवर्ड पासवर्ड, करेक्ट. अब डेडिकेटेड पेज, and there will be some pages which are not linked on the menu or anywhere, just footer probably, terms and condition. We also have privacy policy, है ना. mm, Okay. So majority these are the pages for the pre-login part, at least, correct. For the pre-login part. अब ये सब में हम ये arrows वगैरह भी ऐड करेंगे, just how we did for the journey map. ठीक है, हम इसको भी कनेक्ट करेंगे. Now ये हुआ एक information architecture for pre-login. अब post-login में क्या होगा? That someone lands on the home page, उसको दिखेगा उसने लॉगिन कर लिया है. उसके बाद क्या होगी इसकी जर्नी? तो माय प्रोफाइल होगा, है ना. माय प्रोफाइल, माय blog बुकिंग, blog blog पेज भी आएगा ना, ब्लॉग या फिर हाँ करेक्ट. न्यूज़लेटर. यस, दे कैन हैव ब्लॉग्स, दे कैन हैव न्यूज़. न्यूज़ पेज. अब यहाँ पर एक बाय द वे पैकेज का डिटेल पेज भी आएगा, है ना. एक ऑफर का डिटेल पेज भी आएगा, करेक्ट. जो कि जितने भी ऑफर्स है उन पे डिपेंड करता है, उनके मल्टीपल डिटेल पेजेस हो सकते हैं. हाँ करेक्ट, ठीक है. पोस्ट लॉगिन में, कमिंग बैक टू पोस्ट लॉगिन, वी हैव माय प्रोफाइल, माय बुकिंग्स, और क्या होगा? सेटिंग्स, राइट. सेटिंग्स के बाद हो सकता है रिफंड्स, राइट. सिलेक्ट लैंग्वेज, कंट्री. लैंग्वेज. वॉलेट, वो प्रोफाइल में आ जाएगा, आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करोगे. वॉलेट हो गया, है ना. एंड प्रोबेबली लॉग आउट, ठीक है. एंड या रिफंड्स हटा कॉन्टेक्ट. देते हैं, शायद इसमें होगा. वी कैन हैव सपोर्ट, डेडिकेटेड सपोर्ट, है ना. सपोर्ट. अब प्रोफाइल में तो ठीक है, एक ही प्रोफाइल पेज होगा जिसको आप शायद एडिट कर सकते हो. हाँ, ठीक है, एडिट का एक पेज बनेगा. माय बुकिंग में होगा अगेन योर लिस्टिंग and a detailed page of that particular booking.
सेटिंग में ठीक है, विल कीप इट ओपन फॉर नाउ। सपोर्ट का एक डेडिकेटेड पेज होगा व्हिच इज दिस। वॉलेट हर्ष, में या माय बुकिंग्स में लिस्टिंग का क्या मतलब? लिस्टिंग कौन सा? आपकी मल्टीपल बुकिंग होगी ना, सो आप जब माय बुकिंग में जाते हो तो आपको लिस्ट हाँ हाँ दिखती है माय ऑर्डर की, हाँ, सो दैट इज ओके। द लिस्टिंग तो पेज। सो सो उसके अंदर तो पास्ट ऑर्डर्स और करंट ऑर्डर जर्नी भी बनती है ना, तो अब उनके तो अलग पेजेस होते हैं वही, ना कि नहीं? उसी को लिस्टिंग बोलते हैं। नहीं, उसका ओके पेज सेम ही होगा, उसके अंदर फर्दर बाइफरकेशन है, सो इट विल एक्ट ओके एज अ फिल्टर, नथिंग एल्स। ओके। एंड विश लिस्ट वाला जो हमने बुक नहीं करा है बट विश लिस्ट में डाल रखा है, बुकिंग प्लेटफॉर्म पे आई हैवंट कम अक्रॉस विश लिस्ट। पैकेज होता है ना, फ्लाइट्स आप बुक करके रख लेते हो पर पेमेंट ही नहीं करते। ओके, ठीक है, सो विल टेक दैट एंड हम यहाँ एक और चीज ऐड कर देंगे। We'll call it as, so logout is not a page, so I'll get rid of that. It's just an option. ठीक है, wish list, ठीक है। Also, security and privacy is under my profile. Like if you want to change the password. हाँ, so that will be part of settings and edit profile. Okay. Yeah, ठीक है। So support wallet में एक तो आपका आ जाएगा, एक डेडिकेटेड एक वॉलेट पेज तो है ही, ठीक है। ऐड मनी और रिमूव मनी, विड्रॉ, सॉरी, है ना, विड्रॉ में, ठीक है। सो आपके जो भी रिफंड्स वगैरह जो भी आते हैं, और एक हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, करेक्ट, हिस्ट्री, ये सब आ जाएगा आपके पोस्ट लॉगिन में। क्लियर? अब मैं जो मॉड्यूल्स की बात कर रहा था, ठीक है, सो व्हाट आर मॉड्यूल्स? सो जैसे फ्लाइट है, सो फ्लाइट एक अपने आप में एक मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर देयर आर मल्टीपल स्क्रीन्स। होटल्स इज अ मॉड्यूल, उसके अंदर देयर आर मल्टीपल स्क्रीन्स। लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड टुगेदर आर कॉल्ड एज वन मॉड्यूल व्हिच इज ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। फिर पोस्ट लॉगिन, उसमें माय बुकिंग का एक मॉड्यूल है, वॉलेट इटसेल्फ इज अ मॉड्यूल, ठीक है। सो इस तरीके से जब हम इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, इट इज इजियर फॉर डेवलपर्स एंड क्लाइंट्स आल्सो टू अंडरस्टैंड। सो हमको ये जानना जरूरी है कि क्या स्क्रीन है और क्या मॉड्यूल है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। सो एक मॉड्यूल है, वो अगर कोई मैं booking.com पे देखूं या मेक माई ट्रिप पे देखूं, सेम ही होगा। उसके डेटा पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बट द मॉड्यूल विल रिमेन द सेम, है ना। सो द मॉड्यूल्स आर ऑलवेज द सेम फॉर सिमिलर डोमेन। ऑफ कोर्स अगर मैं गूगल पे देखूंगा तो गूगल पे के मॉड्यूल्स और फोन पे के जो कोर मॉड्यूल है वो सेम होंगे पेमेंट के, है ना। स्कैन करो, अमाउंट डालो एंड पे, सो वो एक मॉड्यूल हुआ पेमेंट मॉड्यूल का, करेक्ट। सो वैसे व्हेन क्लाइंट सेज कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, सर इसमें कौन से मॉड्यूल्स होंगे, व्हाट इज द स्कोप। सो आपको तुरंत रजिस्टर हो जाएगा, अच्छा व्हेन आई से फ्लाइट मॉड्यूल, इट डज नॉट मीन दैट ओनली बुकिंग ऑफ फ्लाइट, उसमें इतनी सारी स्क्रीन्स आएगी, ये आपको मेंटली पता चल जाना चाहिए, है ना, इसलिए ये जानना जरूरी है व्हाट आर मॉड्यूल्स। क्लियर? सो दिस इज ओके। आवर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो अब हम इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। हर्ष, या सॉरी, मॉड्यूल जो है वो ये फ्लाइट का जो प्रोसेस है, जो पूरा कंप्लीशन तक का, उसके अंदर जितने पेजेस आ रहे हैं जो यस, नेसेसरी है वो सबके सब में होगा, वो बेसिक नीड्स हैं, अब उसको कोई कैसे भी करे सजा दजा के। So हाँ, those are modules जो which will be same for everyone एग्जैक्टली, mostly. एग्जैक्टली। And एक और टर्म आपने कौन सा यूज किया था मॉड्यूल के अलावा? स्क्रीन्स होती है, सो मॉड्यूल्स विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स। ओके
That is Yeah. like, mhm, So जैसे आप अगर आप थाली पकड़े, right? If you take up one proper meal, and mhm, in that meal you have rice. So now rice can be used, and you can create biryani, you can create tawa pulao, you can mhm, create risotto, whatnot. mhm, So it can be reused, right? So similarly, mhm. screens can also be reused, but it can be modified based on the modules, depending on the module. है ना? Okay, yeah. So as in just for over here, search is the one screen which can be used for flight and hotels, but it Correct, is modified for both of the domains. correct, perfect. Right? So इस तरीके से what we'll do is we'll fine tune this with all the connections, है ना? अब इसमें इस तरीके से हम सब जगह ये सब लाइंस वगैरह बना देंगे, दैट इज ओके. अब इसमें एक और चीज होती है. व्हाट इज दैट? वी फर्दर डिवाइड दिस. ओके, अब ये ऑप्शनल स्टेप है. इफ वी वांट टू वी कैन, एल्स इट्स कंप्लीटली फाइन. जब हम बोलते हैं कि ये हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, देयर आर फ्यू क्लाइंट्स दैट वी कम अक्रॉस जिनको ना इसी फेज में ये चाहिए होता है कि अब इसके अंदर क्या आएगा, है ना? इसके अंदर क्या आएगा? तो फिर आप क्या करते हो? ये तो ठीक है, आपका एक मेजर मॉड्यूल वाला तो सब कुछ हो गया इसमें. देन यू स्टार्ट डिफाइनिंग व्हाट विल बी देयर अंडर वन स्क्रीन, है ना? सो अभी मान लो ये होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन में कौन से सेक्शंस होंगे? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीन एंड देयर पर्टिकुलर सेक्शंस. ठीक है? सो अभी होम में क्या होगा? सबसे पहले सर्च होगा, करेक्ट? सर्च के बाद we will have say popular packages, correct? Then probably we'll have offers. Hmm? We can have popular destinations. मैं बस randomly मेरे mind में जो आ रहा है मैं लिख रहा हूँ. This can be the option. There can be about, and then there will be nothing but a footer, say for example, right? So these are the sections that we will have on the home page. करेक्ट. सो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो आपके इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में. समझ में आया? सो फिर आप क्या करोगे? आप ऐसे आप एक पेज का नाम लोगे और आप हर एक पेज के अंदर कौन से सेक्शंस आएंगे आप वो लिखोगे, नॉट द डेटा पॉइंट्स. अब सर्च में वो फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन आएगा, वो सब नहीं लिखना है यहाँ पे, लेकिन कौन से सेक्शंस आएंगे बस वो लिखना है. So let me share my screen and let me give you an example of what is a section. So, Harsh, like, Yeah. do we need to um, think about whatever content or whatever sections there will be in the website every time as a Sections, UX yes, designer? yes, yes. We have to think about the sections, not the content at this moment. Oh yeah, not the content, but the sections. Like, what will Yes, be there on home page or about page or contact page? correct, correct. So, say for example, this is the homepage of Make My Trip, and we are working for Make My Trip. Okay. So the first section that you see is the search. This entire thing is nothing but a search. Correct. Then what we have some data items. You can skip this for now. ओके, क्योंकि ये शायद डिफाइन करना एट दिस स्टेज वुड बी डिफिकल्ट. ये आप जब वायर फ्रेम बनाओगे तभी शायद आपको क्लिक हो सकता है, या फिर डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट आल्सो. ठीक है. नाउ दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस हैज बीन एडेड because they want to upsell their other services, which is this way to go is their personal thing. कि आप पर्सनली उनसे बुकिंग करवाओ, इंश्योरेंस, international flights, MICE, which is for corporates, and gift cards. They want to push this, इसलिए उन्होंने इसको फर्स्ट वर्ल्ड पे यहाँ पर रखा है. ठीक है. सो अगर ये रिक्वायरमेंट में आता है वी कैन हाईलाइट इट. ठीक है. So right देन द now, सेकंड सेक्शन इज ऑफर्स. तो ये लोग जैसे क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, बट
this is like this kind of input when they give into this website, क्या इनके लिए drawbacks नहीं होते हैं? नहीं होता है, क्योंकि सी यूजर के पास लिबर्टी है. यूजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर्च करना, जो वेबसाइट उसको दे. ठीक है, लेकिन इनका क्या मानना है बिजनेस वालों का कि हमको ये भी सेल करना है, लेकिन अब मेक माई ट्रिप के पास ये भी है, वो बताएंगे कैसे? बैनर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बैनर पे तो सर्च है और बैनर पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है आजकल. सो स्मार्टर वे ऑफ डूइंग दैट इज अ वेरी स्मॉल बार आउट हियर, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाता है वो कि अच्छा इंश्योरेंस, माइस, गिफ्ट कार्ड मेक माई ट्रिप के पास है, दैट्स इट, उनका काम हो गया. अगर उसमें से 1% लोग भी या 0.5% लोग भी कन्वर्ट होते हैं, उनका काम हो गया. ओके, राइट, हाँ, दैट वे. क्योंकि ये उनका ब्रेड एंड बटर है, इसको वो कुछ छेड़ नहीं सकते हैं सर्च को. बट दीज आर ऑल एड ऑन, ये मैंडेटरी नहीं है. सर्च तो मैंडेटरी है ना, इसलिए. सो एक सेक्शन हमने लिखा सर्च, करेक्ट. दूसरा सेक्शन हमारा हो गया ऑफर्स का. ये तीसरा सेक्शन है, अगेन ये ऑफर्स ही है, इट इज नथिंग मोर. ये एड्स है, इट्स ओके अगर डालना है तो. एक हो गया डाउनलोड ऐप का, हाँ ये हम लिख सकते हैं. ऑफर्स के बाद वी कैन हैव डाउनलोड ऐप. ठीक है, फिर हैंड पिक कलेक्शन. सो दिस इज पैकेजेस, destinations, या एक और sort of packages ही है, right? And then this entire thing is the footer. ठीक है, सो होम पेज पे इतना ही है. सो हमने उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे. क्लियर? सो इसी तरीके से वी हैव टू डिफाइन फॉर ऑल द पेजेस. स्क्रीन, अब ये सारी जितनी भी स्क्रीन्स है, करेक्ट, आप सबका अगर डिफाइन करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर पेज पे ज्यादा चीजें होगी नहीं. अभी मान लो ये सर्च है, तो सर्च आपका कोई जो पेज होगा उस पे क्या होगा? एक सर्च होगा, पूरा सर्च बार, ठीक है, और नीचे कुछ सजेशन होंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा उस पेज पे. तो आप क्या करोगे? आप वहां जाके सिर्फ इतना ही लिखोगे, जैसे जैसे ये फ्लाइट्स का पेज है, या मान लो ये फ्लाइट सर्च पेज है. वैसे ये कोई पेज एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, बट आई एम स्टिल राइटिंग इट डाउन जस्ट फॉर द रेफरेंस. तो आप क्या करोगे? सर्च बॉक्स एंड पॉपुलर फ्लाइट्स, दैट्स इट. इतना ही होगा इस पेज पे, और कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि इसके बाद आएगी हमारी लिस्टिंग की पेज. अब लिस्टिंग पेज पे क्या होगा? तो लिस्टिंग बेस्ड ऑन सर्च एंड फिल्टर्स, बस उतना ही आएगा उस पर. करेक्ट. सो इस तरीके से आप हर पेज के सेक्शंस डिफाइन कर सकते हो. आपको उसके डेटा पॉइंट्स में नहीं जाना है. अगेन आई रिपीट, तो जैसे अगर मैं फ्लाइट पे गया, ठीक है, सो ये मेरा फ्लाइट का पेज है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. इस पेज पे क्या है? तो फ्लाइट का ये मेरा एक सर्च है, इस पे उन्होंने सिर्फ फ्लाइट्स की ऑफर दी है, एंड ये जितना भी सब पेज है सब फ्लाइट्स का हो गया, है ना? सो दिस इज अ फ्लाइट लैंडिंग पेज. अब मैं जब सर्च करूंगा तो वो मुझे लिस्टिंग पेज पे लेके जाएगा. अब लिस्टिंग पेज पे क्या है? वापस सर्च है, फिल्टर्स है, एंड रिजल्ट्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. और डील्स वगैरह दी है, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड. दिस इज ऑल नॉट मैंडेटरी. ठीक है, मस्ट हैव नहीं है, ये है सिर्फ रिजल्ट पेज ही. क्लियर? सो इस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हर एक पेज के सेक्शंस डिफाइन करोगे. एनी डाउट्स? वी आर डिफाइनिंग यूजर जर्नी, के यूजर मोटा मोटा उसकी क्या जर्नी होगी. वेयर विल ही लैंड if he comes from home page, where will he land if he lands from say Google, where will he land when he lands on Instagram, उसकी क्या जर्नी होगी, है ना? And if you look closely, all these pages will be covered in your information architecture. सब कुछ, ठीक है, सब कुछ उसमें मेजरली कवर हो जाएगा. Okay, and then you have a separate small journey for the post login also, and then you define all this sections for individual pages. अब ये सिर्फ आपके लिए भी अगर आप बनाना चाहो, क्लाइंट को ना दिखाओ, that is fine.
दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप क्लाइंट को सिर्फ ये भी बताते हो कि ये पेजेस है और ये उसके सेक्शंस है, इवन दैट इज कंप्लीटली ओके, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स एज टू what type of client it is, what it is, but you should know at least both the ways of doing it, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए ये भी ठीक होता है कि हाँ ठीक है, पता चल गया ये सारे मॉड्यूल्स आएंगे, ये सारे स्क्रीन आएंगे, उनके लिए काफी है, फिर आप सारी डिटेलिंग आपकी वायर फ्रेम में कर सकते हो। बट इफ देर आर सम क्लाइंट्स जो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस में बहुत सारे क्लाइंट है जो बोलते हैं कि अभी ये पेजेस के अंदर क्या आएगा वो भी यहाँ पर ही डिफाइन करते हैं, सो देन इन दैट केस यू हैव टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yeah. Harsh, will this be like a part of our portfolio, like project? Sorry? Will this be a part of our portfolio? Like Yes, what we yes, yes. want So to whatever, submit? yes, so whatever we are designing right now in the lecture will be part of your portfolio. That's why I'm emphasizing that please complete your assignment so that by the end of the course you at least have 2 to 3 projects complete in your portfolio, you know. So normally when we uh, create portfolios to apply for jobs, what is the flow or structure which we need to follow? Like, do we need to create a website and then give different portfolios over there, and then each portfolio has their own flow? No, so it depends. So if you are applying for a UX job, there's no need for UI screens. Whatever we are doing right now is very crucial, is very important. But if you are applying for a UI job, okay, in that case, all this is good to know, but they won't focus more on this. Okay, they'll not focus on the research part. They'll not focus on the personas, the information architecture, etc. What they'll focus more on is the final design that you have designed. Okay, Okay. so there are two approaches of the portfolio. So that's why we are designing end to end. Whether you want to apply for UX, whether you want to apply for UI, you have that liberty that you should know everything. If you know both the things, right, UX and UI, you're always on the upper end. Yeah. Because not all the UI designers know UX and not all the UX designers know UI. So that's why this course is designed in a way that you can jump into any field then, either UX, either UI, whichever you feel comfortable. Yeah. Okay. But like, how do we, if I want to just present UX thing, and So so in the in the end of the course, right, we will also see some samples of the portfolios as to what or how we can present it. So right now what we okay, have is the final content that we will put on the portfolio, but how we will present it, we'll see it later. But okay, this all these data are the thing that we'll be adding, you know, the research part that you have designed, the okay, personas, general research, the use cases, the information architecture, the wireframes that we will design. Till the wireframe stage, everything you'll have to put for the UX. got it. Yeah. Okay. So now quickly moving on to the UX laws. So there's a website. Let me put that in the chat. So here you will have to do a little self-study, but I'll give you the concept of it. So when we, design something, it is not because हाँ बस ऐसा ही होता है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं. There are certain ways of doing it. Why we are doing it? There is a science behind it. ठीक है? उस साइंस को हम बोलते हैं लॉज ऑफ यूएक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएक्स, बिहेवियरल साइंस एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. ठीक है? सो मैंने जो वेबसाइट शेयर की है lawsofux.com,
It majorly has everything that you need to know. Mind well, you won't be by hearting this, और ये शायद होगा भी नहीं आपसे, किसी से भी नहीं होता. इवन आई डोंट रिमेम्बर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल द लॉज बाय हार्ट. कि कोई मुझे नींद में उठा के पूछेगा ये लॉ क्या होता है, आई नो द कॉन्सेप्ट्स, नाम ऑफ कोर्स मैं भूल जाता हूँ. राइट. सो द मेजर पार्ट ऑफ दिस इज यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस. आप शायद नाम भूल जाओ, दैट इज फाइन, बट कॉन्सेप्ट आपको याद होना जरूरी है. सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हम पहले देखेंगे. ठीक है. Yes. So the first thing is, the Fitts law. You can see my screen, right? So what happens is, when you see a website, say for example, you see, say for example this website. Okay? You see a prominent here. You see a prominent from to, right? It is easy. But whereas now if you see this website, No, Harsh can't see your screen. sorry. स्क्रीन नहीं दिख रही, मतलब हाँ मैक हाँ माई हाँ, ट्रिप कर रही है. correct, correct. It's loading, so I'm sharing it. But now if you see Airbnb, okay, so you take this example of make my trip. ठीक है, आप hotels पे गए. So it's so nice, prominent कि आप mouse सिर्फ यहाँ लेके जाओ, you understand that yeah it is clickable, है ना? Yes, this entire area gets a little background, and you know as to what I have to do, correct? So Fitts law क्या बोलता है? That the target area that needs to be clicked, it should be very much be feasible or accessible to you. Accessible is the word. ठीक है. इसलिए सर्च भी अगर आप देखो तो प्रोमिनेंट है. वेयर एज इफ यू सी एयरबीएनबी, इन्होंने इतना सारा डिजाइन पे काम कर लिया है दैट दे हैव समहाउ मिस्ड आउट ऑन द यूएक्स. नहीं, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक. क्योंकि व्हाट दे हैव डन स्मार्टली इज, बट यहाँ पर स्टिल एक एडिशनल क्लिक है. तो ये क्या किया इन्होंने, एनीवेयर के लिए क्लिक किया. सो नाउ आई नो कि हाँ ठीक है यहाँ पर. सो आई नाउ हैव टू सर्च, say for example Singapore. ठीक है. Then it takes me to here. So यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट गो में शायद मेरा वो एक्सपीरियंस हैम्पर है जब मैंने क्लिक नहीं किया, बट द मोमेंट आई क्लिक ऑन इट, राइट, दे हैव आल्सो टेकन केयर ऑफ द फिट्स लॉ. लेकिन यहाँ पर सर्च इनका बहुत छोटा है, करेक्ट. whereas if you see make my trip, prominence is on the search. यहाँ पर prominence search पे इतना नहीं है ना. बट द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, यू हैव इट. फिर आप सर्च के अलावा कुछ नहीं देखते हो, विच इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ विच इज नथिंग बट द फिट्स लॉ. सो अगर आप इसको क्लिक करके पढ़ोगे, सो यू विल सी द डिटेल्स ऑफ इट. आपको गो थ्रू करना है सारे लॉज. मैं नहीं बोल रहा हूँ बाहर करना है, माइंड वेल, आई एम ओनली सेइंग प्लीज गो थ्रू इट. ठीक है, अंडरस्टैंड करो. कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है या अगर किसी का इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस पर्सनली. ठीक है. लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है, आई एम टेकिंग यू गाइस थ्रू दैट. एक होता है, फिर मैं गोल ग्रेडियंट पे बाद में आता हूँ, हिग्स लॉ. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू अ थियरी ऑफ जैम थियरी. ठीक है. एक रिसर्च किया था ऑफ द जैम. दो शॉप थे, एक पे था 3 जैम्स, ओके, $10 ईच, और दूसरे स्टोर पे था 3 flavors of 10 flavors of jam. फर्स्ट पे था only 3 flavors of jam, और सेकंड इस पे था 10 flavors of jam, which is $5 each. अब सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर जा रहे होंगे? Normally 10 flavors, but big 3 flavors वाला ही बिक रहा होगा. एग्जैक्टली. सो 10 flavors वाले पे सबसे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेल था
वो 3 फ्लेवर्स पे हो रहा था. Why? Hmm. Because more the options, More more confusion. complexity, more confusion for the users to decide, है ना. सो इसलिए जिसके पास बस 3 ही फ्लेवर थे वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट थी. इसलिए Hmm. whenever we design something, make sure कि जो फोल्ड में दिख रहा है, correct, that is not cluttered, that is not too much for the users to understand. So that's why if you see these websites, फोकस एरिया क्या है, यही है. भले यहाँ पर चीजें ज्यादा है, बट इन्होंने काफी अच्छे से इसको कॉन्ट्रास्ट में सेट किया है. सॉरी, काफी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में सेट किया है इन्होंने कि आपका फोकस सर्च पे रहेगा, है ना. सेम इज विद एयरबीएनबी आल्सो. यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब एक और चीज है विच इज कॉग्निटिव लोड ऑफ द यूजर. उस पर मैं आता हूँ, लेकिन टू अगेन कम बैक टू हिग्स लॉ, ऑलवेज reduce the complexity, reduce the number of choices. ठीक है. This is the second important law. First was the Fitts law, second is the Higgs law, now third is the Miller's law. कहाँ पर है? Here. This is very important. The average person can only keep 7 plus or minus 2 items in their working memory. I would say plus 2 भी उसको भूल जाओ. The time have changed now. It is Hmm. either 7 or minus 2. ठीक है. अगर आप ये देखो, इतने सारे डेटा आइटम्स है, आप सब आप भूल जाओगे, इतना आप ध्यान ही नहीं दोगे कभी, राइट. ये क्या क्या दे रहा है एयरबीएनबी. सेम इज Hmm. विथ मेक माई ट्रिप. आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड देखोगे, उसके बाद आप बोलो छोड़ो, नहीं मेरे को नहीं चाहिए ना, जाने दो, राइट. यू इग्नोर इट, सिंपली यू इग्नोर इट, है ना. सो इसका अगर परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मिलर्स लॉ का देखना है, राइट, सो इट इज गूगल पे. इफ यू Yeah. वांट टू सी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हिग्स लॉ, इट इज गूगल पे. सो Hmm. सिंपल, सो सिंपल. आप सिर्फ जाते हो, नाम सर्च करते हो, या फिर आप स्कैन करते हो. अगर पास्ट में है तो रिसेंट में नीचे दिख जाता है. ऊपर सिर्फ 4 आइकन्स है, सेल्फ ट्रांसफर, स्कैन, व्हाटएवर, टू द पॉइंट. कोई ज्यादा हैसल नहीं है. whereas उसके डोमेन में इफ यू सी पेटीएम, इफ यू सी फोन पे, सो कॉम्प्लेक्स, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अरे इतने सारी चीजें हैं, कहाँ ध्यान दो, कहाँ क्लिक करूँ, मुझे क्या करना है, पहले तो ढूंढो, है ना. सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. So always remember, जब हम navigation बनाते हैं, this part is majority important, majorly important for the navigation. जो हम ऊपर मेन navigation बनाते हैं उसके लिए, ठीक है. मिलर्स लॉ. अब एक चीज आती है जो मैं पहले बता रहा था, which is the cognitive load of the user. Now what is that? What is 2 plus 2? 4. Okay. What is 8 plus 8? 16. What is 17 into 144? Blah blah नहीं, blah. राइट. तो जो फर्स्ट दो आंसर हमने दिए ना, हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया है. Hmm. We knew it, correct? We knew it. So what we already know, that's a cognitive load. So it is a very important aspect when you design. क्योंकि users spend a lot of time on other websites, correct? तो वो Hmm. already कुछ चीजें वहां से सीख चुके हैं. They have already learned a lot of things from other websites. Hmm. So using that particular cognitive load, we have to make sure that we don't reinvent the wheel. We have to make sure that we don't hamper their experience. So now let me give you a very nice example for this. Make my trip, ठीक है, इस तरीके से वो करता है कि from to departure return search, correct, clear. Yeah. Now if you compare Airbnb, उसने start अलग दिया है, उसका सर्च बार अलग है, बट जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा था यार सर्च बार छोटा है, but the Hmm. moment I click on it, my cognitive load says, oh, it's the same. It's from to check in, check out. That's it, right?
समझ में आ रहा है? सिंस मैं होटल पे था, सी यहाँ पर सेम है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी। कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, चेक इन, चेकआउट एंड रूम्स, इट्स एग्जैक्टली द सेम। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इज, उनका फर्स्ट अप्रोच शायद छोटा है, सर्च बार, बट द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, इट इज एग्जैक्टली द सेम, है ना? So they are using the cognitive load of the user, which is for the other websites, that this is how user is accustomed to search a particular stay. तो उन्होंने उसको सेम रखा है, एनहांस किया है, but deteriorate नहीं किया। Getting my point? So always focus on the cognitive load of the user. कुछ भी high fund बनाने मत जाओ। Don't try to always think out of the box. Yes, you can, but make sure that it is not hampering the user's experience majorly. Yeah, it is not it is not enhancing the, sorry, it is not exploiting the cognitive load of the user. ऐसा ना हो कि अरे यार ये क्या बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? If that is the case, then it's a bad design and it's a bad experience. Clear? So always focus. इसलिए हम जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमको उस नजरिए से देखना है ना, कि इस डोमेन में लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, इस डोमेन में व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज द नो हाउ, है ना? दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर वेबसाइट आल्सो। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ एक ही सर्च बार दूंगा, तो यूजर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे चेक इन चेकआउट डेट कहाँ डालूं, है ना? सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव टू look at the competitions from that perspective also, from the user's perspective, कि हाँ ठीक है, यूजर ये सारी चीजों से अकस्टम है, इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। Clear? But one just my point, Harsh, Yeah. कि जो आप कह रहे हो वो तो ठीक कह रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अभी किसी एंड्रॉइड फोन यूजर को आईफोन दे देता हूँ, मुझे पक्का पता है वो कंफ्यूज होगा पीछे कैसे जाना है, बैक कैसे जाना है ना? उसकी Correct. लर्निंग नहीं है वो। Correct. तो बट स्टिल वो जो एप्पल का जो यूआई है वो आज सब एंड्रॉइड से ज्यादा अच्छा माना जाता है। हम्म, हम्म, तो एक यूजर एक्सपीरियंस है एप्पल का ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो माय पॉइंट इज कि कभी कभी हाँ हो सकता है कि चीजें जो चल रही हैं वो चल रही हैं और उसी के हिसाब से सब सीखे हुए हैं तो वही कर रहे हैं। Correct. तो मार्केट में कोई ना कोई डिस्ट्रप्टर भी आया है जिसने चेंज करा है लोगों का सोचना। Correct. हाँ, हमें मैक्सिमम केस में वैसा सोचने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे हो सकता है कि चीजें आज भी कहीं इस प्रोसेस में भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो, बट हमने अब फील करना बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास इसकी नॉलेज है। Correct. तो अभी भी इन प्रोसेस को अलग तरीके से करके सिंपल वे में और करा जा सकता है। मैं भी नहीं बोल रहा मेरे पास कुछ है ऐसा कुछ, आई एम जस्ट पुटिंग आउट अ पॉइंट कि क्या ऐसा कि हमें हमेशा कस्टमर जो ट्रेंड जो फॉलो करते हुए आ रहा है वही उसी को फॉलो करना है, या फिर कभी हो सकता है कि हाँ यहाँ लग रहा है कि यार कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है बट दिस इज मेकिंग थिंग्स मच इजियर। नाउ आई एम गेटिंग योर नॉलेज ऑन टू दिस पॉइंट। अब इस पे आई वांट टू। Yes. Yes. So it's a very fair point. ठीक है, जब तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है टू मेक इट इजियर, डोंट डू इट। ठीक है, आपने जो एग्जांपल दिया फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस, ठीक है, सॉरी एंड्रॉइड एंड एप्पल, अब उसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो भी एंड्रॉइड यूजर है, अगर आप उसको आईफोन दे दो, उसको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, लेकिन द मोमेंट उसको एक बार समझ में आ गया, वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। करेक्ट? नाउ दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ यूएक्स। इट इज अ सेइंग that if you have to explain user once, that is fine, but if you have to explain the user the second time, then it's a bad UX. ठीक है, सो आईफोन इतना सिंपल बना दिया है उसने, इसलिए लोग उसको अडेप्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे आपने बैक का एग्जांपल दिया, सो उसमें बैक बटन ही नहीं है,
हाँ या फिर अगर एप्स में है तो ऊपर है। सो यूजर के लिए बहुत सिंपल हो गया ना, इफ आई जस्ट हैव टू स्वाइप, ठीक है वो बैक आ गया, या ऊपर ही मुझे बैक बटन दिख रहा है मेरी आंखों के सामने ही, सो आई वुड गो बैक, है ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसने क्या किया, एक और कॉन्सेप्ट है किस, जिसको हम बोलते हैं कीप इट सुपर सुपर सिंपल। कीप इट सुपर सिंपल। यस, ठीक है। सो उसने क्या किया, बेसिक कॉमन सेंस है ना, ठीक है बैक बटन ऊपर डाल दो, उसने डाल दिया, है ना। आप जहां से आए हो आप वहीं पर वापस स्वाइप करो तो वापस वहीं चले जाओगे, उसने जेस्चर यूज किया वहां पे, है ना। सो इफ यू हैव द सोल्यूशन using users common sense, again cognitive load, his basic common understanding, अगर आप solution दे सकते हो only then do it। अगर मान लो चलो जब अभी मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक ही अगर सिर्फ हम सर्च बार दे दें, ठीक है, मान लो ये है होटल बुकिंग। अब सबसे पहले चीज मैं बोलूं कि इसको हम स्टेप वाइज अप्रोच लेते हैं। तो इमेजिन, एक खाली मैं अप्रोच दे रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस, कि अभी यहाँ पर मेरे आंखों के सामने 4-5 फील्ड है, 4 फील्ड है। मैं बोलता हूँ मुझे गोवा जाना है, ठीक है, 19 तारीख को, 21 को वापस आऊंगा, ठीक है, और 2 एडल्ट है, मुझे एक रूम चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च किया, आ गया। अब मैं सोचता हूँ कि नहीं यार कुछ अलग करते हैं एज ए यूएक्स डिजाइनर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एकदम नीट बनाते हैं, मजा आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, चलो लेट्स पुट इट आउट। मैं क्या करता हूँ, मैं ना सिर्फ एक गूगल के जैसे द बेस्ट यूएक्स, मैं गूगल के जैसे सिर्फ एक सर्च बार डाल देता हूँ, ठीक है, वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। अब क्या हुआ, यूजर आएगा, यहाँ लिखेगा गोवा, और उसको फिर क्या दिखेगा, लिस्टिंग स्क्रीन जो ऐसी कुछ होगी। सॉरी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी। हाँ, तो मैं ऐसा कुछ बना दूंगा, पूरी स्क्रीन पे कुछ नहीं है, बस वेयर यू वांट टू गो, क्लियर। और फिर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, सर्च पे क्लिक करने के बाद ये हो गया। सर्च पे क्लिक करने के बाद मुझे ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी लिस्टिंग की, गोवा। अब यूजर बोलता है अरे लेकिन ये कौन से दिन की अवेलेबल है, करेक्ट। डेवलपर पूछेगा कि ये कौन से दिन का मैं अवेलेबिलिटी बताऊं, वही तो डेट होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि चलो कल की डेट बाय डिफॉल्ट दिखा देंगे, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पर जाके फिर चेंज करेगा, 19 को जाना है और 21 को रिटर्न आना है, ठीक है। और फिर मेरे यहाँ पर रिजल्ट फिल्टर होंगे। हुआ क्या इससे, एक हिंड्रेंस पैदा हुआ, है ना। नाउ दिस इज अ हिंड्रेंस, क्यों, क्योंकि यूजर को ऑलरेडी चीजें पता है कि भाई मुझे गोवा जाना है, इस डेट से इस डेट तक जाना है, और इतने लोग हैं। सो एक बार में पूछ के खत्म कर दो ना, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट बताओ, एक एक चीज पूछ के मुझे परेशान मत करो। गेटिंग माय पॉइंट। सो यूजर का बिहेवियर जो फिजिकल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में होता है, वही उसका सेम बिहेवियर ऑनलाइन भी होता है ना। आप मान लो आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और आपके माइंड में है मुझे ब्लू सूट ही पहनना है, ठीक है। आप जाओगे दुकान में, आप उसको पूछोगे कि मुझे सूट दिखा दो, ठीक है, वो आपको भर भर के सूट दिखाता है। फिर आप उसको बोलते काम करो मुझे सिर्फ ब्लू सूट दिखाओ, ठीक है, तो ब्लू बाइफरकेट करेगा, ये वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल। फिर आप उसको एक काम करो मुझे ना सिर्फ वेलवेट में दिखाओ, फिर वो आपको और दिखाएगा सिर्फ वेलवेट में, है ना। हुआ क्या, सामने वाले ने आपके लिए पहले तो सारे सूट निकाले, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। फिर उसके बाद उसमें आपने एक फिल्टर ऐड किया कि भाई सिर्फ ब्लू चाहिए, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर उसमें आपने एक और चीज ऐड की, सिर्फ वेलवेट का दिखाओ, एक और एफर्ट, है ना। वो यही सेम चीज आप जाके बोल सकते थे मुझे ब्लू वेलवेट सूट दिखाओ, एक ही लाइन थी, मुझे ब्लू वेलवेट सूट दिखाओ, दैट्स इट। आपको डायरेक्टली वही बता ना, कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका और उसका। तो टेक्नोलॉजिकली वाइज आपके कितना सर्वर लोड बढ़ा,
जब आप एक ही चीज में आप आपका रिजल्ट दिखा सकते थे, उसके लिए आपने 4 बार सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, है ना? Hmm. So the same Hmm. things apply here also. What happens in real life happens on the digital life also. Hmm. इसलिए if you have Okay. something कि भाई एकदम सिंपल हो जाएगा, जैसे गूगल पे, Hmm. है ना? मान लो गूगल पे ऐसा Hmm. करता है जैसे हम बैंक अकाउंट वाला कर रहे थे पहले, कि आप पहले Hmm. आपको जिसको भी रुपए भेजना है, आप सबसे पहले उसका यूपीआई आईडी लो, ठीक है? यूपीआई आईडी Hmm. पहले आप बेनिफिशियरी में ऐड करो, बेनिफिशियरी में ऐड करने के Hmm. बाद आप 2 घंटे वेट करो, फिर उसके बाद आप उसको कभी भी Hmm. भेज सकते हो। तो कितना हैसल होता है, कितना सिंपल कर दिया, Hmm. मोबाइल नंबर डालो, खत्म करो बात। नाउ दैट इज डिस्ट्रप्टिव, Hmm. राइट? इफ Hmm. यू हैव सच सॉल्यूशन ओनली देन इम्प्लीमेंटेड, वरना आपका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यूजर्स के लिए और Hmm. टेक्नोलॉजी वाइज True. ऑल्सो। सॉरी मेरा आंसर थोड़ा Hmm. elongate हो गया, बट आई थॉट कि इट शुड बी क्लियर। Hmm. नहीं नहीं, it was good. क्लियर है? Hmm. ओके परफेक्ट। ठीक है, एक लास्ट लॉ जो हम देखते हैं, ठीक है आज, विच इज द गोल ग्रेडियंट इफेक्ट, विच इज अगेन, अच्छा बाय द वे बिफोर वी गो टू गोल ग्रेडियंट, देयर इज वन मोर कॉल्ड एज द जेकब्स लॉ, जो कॉग्निटिव लोड से रिलेटेड ही है। जो मैंने बोला ना कि यूजर्स ऑलरेडी Hmm. बहुत सारा टाइम दूसरी वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं, Hmm. राइट? सो जेकब्स लॉ भी वही बोलता है कि that Hmm. means users prefer site to work the same way as the other sites Hmm. too, because they already know it, है ना? So Jacob's law भी बस वही explain करता है, ठीक है? Now coming to the goal gradient effect, कोई भी चीज अगर आपको इनकम्प्लीट दिखती है ना प्रोग्रेस बार में, परसेंटेजेस में, you are bound to complete it faster. Goal gradient effect ये बोलता है, right? That if you see that the profile is incomplete and it is completed only 75%, so you will just click on it and see as to how do I complete that rest of the 25%. If you see Amazon, they have those 4 steps on the top when you move to cart, correct? The moment you move to cart and proceed, you know that these are the 4 steps that I have to do. Imagine that वो steps नहीं होते, those steps were not there. तो क्या होता है? You go to cart, you click on next. Oh, they are asking me for my address. ठीक है चलो. Next, अरे, they are again asking me for my review. Next, अरे, they are asking me whether I have to use a credit card, debit card. Then next, oh, they are again asking me for final review. कितने सारे स्टेप है यार, एक बताओ ना, खत्म कभी होगा? You get frustrated because you don't know as to what is the final destination, right? So that is why goal gradient effect give you a goal and it gives you where do you stand right now. Okay, so that is why this particular behavioral aspect is very crucial when we design the UX. Always tell the user where they are and where they will reach. Okay, so अगर आप sign up forms बना रहे हो, divide the journey, show them the steps. If you are creating a form, a feedback form, same thing. If you want them to complete the journey, show them the progress bar that you have completed 25%, right? So they are bound to complete it more. Okay? So these are some of the important UX laws that we have to take care. So Niket, when you next time see the competitions, right, focus on these UX laws, and then you will be easily, then you will be easily be, then you will easily be able to understand Okay. whether navigation is having 7 items, is it having 10 items, is it confusing for me, right? Is the size of the buttons proper or not? Is the clickable target area proper or not? When you see it from that perspective now, you will understand, oh, this website is good, this website is better, this particular aspect is fine, but this is not good, etc. Okay. Right? So this Yeah. is how you gradually progress in this UX and UI. Clear? Yeah. So
today's GAN was this much only, but we have covered the majority of the UX part. Okay? From Wednesday, we'll start with the wireframes. But I request everyone to please complete your assignments, and till Wednesday, the coming Wednesday, please complete this use cases, the information architecture with sections, okay, and go through the UX laws. अगर किसी का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और यूज केसेस हो जाता है, टेल मी, आई विल गिव यू अनदर प्रोजेक्ट. ओके, more the practice you do, more it is easier for you in future. Okay, so I don't want to bombard you guys with a lot of things. If you guys would have been on laptop, we would have done a lot of uh, things together in the information architecture. So make sure on Wednesday, please uh, connect from your systems, because we will be doing live wireframing session again. So if only I am the one designing, it won't help you much, right? You will only see and observe. But if you do it in parallel while I am designing it, that will help you learn faster. Okay? So please join from your systems. It will be at 8:30 only. It was only today that we did earlier, right? So yes, that's it from my end. Yeah, Vineet and Honey, tell me. सर मैं स्टार्टिंग में नहीं थी आज, तो लाइक क्या हुआ था, आप शॉर्ट में बता सकते हो? We covered the. Okay, let me share my screen. Yeah, Vineet, तब तक आप बोल लीजिए. हाँ विनीत बोलिए ना. हर्ष, जो हमने Yeah. आज किया उसको आप शेयर करोगे क्या? यस, तो ये आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट पे. ओके, ठीक है. हाँ विनीत, आपको कुछ बोलना था, आपने हैंड रेस किया. सर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हमने जो यूजर पर्सोना बनाया था उस पर ही बनाना ना है, वेबसाइट का बनाना है. हाँ, वेबसाइट का बनाना है ना हमको. ओके. सो हनी, हमने क्या किया था, हमने शॉर्ट जर्नीज बनाई थी. कि मान लो एक ये यूज केस लिया हमने, ठीक है, कि एक यूजर इज इन रश एंड वांट्स टू बुक होटल एंड फ्लाइट अर्जेंटली. सो यहाँ पे क्या हुआ, वो होम पेज पे आया, डायरेक्ट उस फ्लाइट सर्च की, लिस्टिंग पे गया, फ्लाइट डिटेल पे गया, बुक किया, बुकिंग डिटेल डाल के पेमेंट एंड सक्सेसफुल, एंड सेम फ्लो में उसने होटल भी बुक किया. दैट्स इट. सो ये एक यूज केस हुआ, ठीक है. दूसरा यूज केस हमने लिया कि अब उसको अपनी जो बुकिंग की जो डिटेल्स है वो होटल रिसेप्शन में बतानी है. सो व्हाट ही विल डू, he will go to the home page from his mobile, he'll log in, he'll go to my account, go to my bookings and open that particular booking. So these are the use cases that we have to design, what different use cases we have to cater. Okay, and based on these use cases and the complete competitive analysis and everything, we have to design this complete end-to-end information architecture, which comprises of all the screens and the modules. So modules will have different screens in that particular module. Okay. Right. So for example, if you have the flight module, flight booking module, so it has these many screens. So if the person will click on flight, he will search, he will have listing screen, he will have flight detail screen, booking detail, review, payment, confirmation. Same is for the hotels. So these are all the pages that we will have on the website. This is the pre-login, without login. And once I log in, I have these many pages and the modules. So I have a wallet module, I have wishlist module, booking module, profile module, etc. Okay? So this entire thing is called as the information architecture. And then there is a detailed information architecture where we also define the sections of individual pages. Okay, so all this you have to do in the assignment also, that you have to define as to under home page what all sections will be there, not the data points, only the sections. That they will be search, there will be popular packages, there will be offers, etc. On the flight page, there will be a search box, there will be popular flights. That way. Okay. So this was in a very small gist. I'll send you this lecture also, so you can deep dive in that also. That too.
ये सब जर्नी मैप में आ जाता है, यूज केस नहीं, एंड आई। ये जो है जो यूज केसेस वाला वो जर्नी मैपिंग है। उसके बाद ओके हमने ये जो डिटेल वाली बनाई, दिस इज द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ओके ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। क्लियर? यस या Okay, so we'll meet next Wednesday then. Okay, I am expecting everyone of you all to please complete your assignments, join from the systems, and design with me in parallel when you guys join. Okay, it would be really helpful क्योंकि सिर्फ verbally समझोगे सुनोगे, it won't be much useful to be हाँ very honest. क्योंकि आप फिर कोई Udemy का कोर्स कर लो या कुछ भी कर लो, it would be the same. ठीक है, क्योंकि जो लॉज है जो कॉन्सेप्ट्स है मैं वही समझा रहा हूँ, बट द यूएसपी ऑफ द कोर्स इज द लाइव सेशंस, राइट, द लाइव डिजाइनिंग। जब तक वो नहीं करोगे, इट इज लाइक मैथ्स। स्कूल में जब तक प्रैक्टिस करवाते थे आपको तो ही मैथ समझ में आता है, घर पे आके भी प्रैक्टिस करोगे तो मैथ समझ में आएगा। आप रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा भी मार लिया चलो, लेकिन जब अटकोगे फिर क्या करोगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना, बनाना, डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना तो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज है यूएक्स के, यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज है यूएक्स के, है ना। इसलिए शुरू किया था ये कोर्स, ताकि आई शेयर माय एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। साथ में जब हम बनाते हैं ना, जब मेरे ऑफिस में बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, व्हाई डू दे लर्न फास्टर? आई वांटेड टू गिव दैट सेम एक्सपीरियंस टू यू ऑल, क्योंकि they sit next to me and they design with me. They see, they observe, and then they design and they ask for feedback. Correct? So I want the same feel for you all also. कि आप लोग भी असाइनमेंट जब मैं दे रहा हूँ बना के तुरंत मुझे भेजो, डोंट वेट फॉर लेक्चर्स। जैसे निकेत था, उसने भेज दिया था, आई हैड गॉन थ्रू दैट बिफोर ओनली, इट वाज ऑल गुड, सो उसके पे कोई फीडबैक नहीं था अपार्ट फ्रॉम दैट वन स्मॉल थिंग। करेक्ट? सो ऐसे करके मुझे भेजते जाओ, आई गिव यू गाइस द फीडबैक एंड आई गिव यू गाइस मोर प्रोजेक्ट्स टू डू। करेक्ट? सो ऐसे आप ज्यादा बेटर सीख पाओगे। ठीक है, all right guys, see you then. We'll meet on Wednesday. Okay, okay Harsh. Thank you. बाय all right, Thank thank you so much, have a nice weekend थैंक and hope कल आप सबका क्रिकेट मैच का प्लान अच्छा हो। Hopefully. Yeah, ठीक all है right, thanks, Okay, bye. thanks, Bye. bye.